हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 दैट इज पोइट्री। कल के लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही बेशुकीमती लेक्चर दिया, सेशन दिया, जिसको बहुत बच्चों ने पसंद किया और कहा कि सर मुझे ऐसे ही सेशंस, ऐसे ही गाइडेंस की ज़रूरत थी। और इस बार हम इन यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे कैसे उन बिगिनर्स को पढ़ना है जिनको कोई दिशा निर्देश नहीं है या जो दिशा के बारे में नहीं जानते हैं। तो ओएसएन एकेडमी एक ऐसा चैनल है और एक ऐसा गाइडेंस है जो आपके लिए इंडिस्पेंसेबल प्रूव हो सकता है आपके करियर के लिए। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल एंड दिस इज ओएसएन एकेडमी ऑफ इंग्लिश सिंस 1998। आज हमारा यूनिट 2 है जिसको कहते हैं पोइट्री। इस सेक्शन पे आज हम लोग ये समझेंगे कि हमें कैसे अपनी पोइट्री के विंग को तैयार करना है, क्योंकि yesterday I had told you that the government or the NET NTA has not given us any detailed syllabus. So the students all over India, they're always surprised, very anxious, full of anxiety that what to study, what to not study. इसीलिए हमारे इन सेशंस का जो थंबनेल है वो लिखा है मैंने what to study in unit 1, unit 2 and like this. So my dear students, a very good morning to all of you. Welcome here at OSN Academy. And in case you are an aspirant of making yourself the best in your college, in your state, in your city, in your family, then this is the right destination for any of the examinations in India, including IAS optional. So let us start. यूनिट नंबर 2 पोएट्री। जल्दी जल्दी हमारे साथ लाइव आ जाइए, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ, जैसा कि हमने कल देखा था ड्रामा में एंड आई हैड टॉट ऑल द डिटेल्स, इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट 2 पोएट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पोएट्री में दैट इज इंट्रोडक्शन. And yesterday, around 4 students, yes, 4 students have joined my bilingual batch. One from Jharkhand, one from Kashmir, one from Chennai, one from Lucknow. And they told me telephonically that yes sir, जो आप पढ़ा रहे थे एग्जैक्टली हमको वैसे ही पैटर्न आपके पेड क्लासेस में मिला. एंड दे सेड दैट यस सर, वी आर वेरी लकी टू हैव योर क्लासेस. सो ये हमारा फॉर्मेट होता है पढ़ाने का. जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं डोंट मिस इट, क्योंकि हमारा जो वैलिडिटी कोर्स का है दैट इज 1 ईयर. हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से कहेंगे कि वो न्यू बैचेस के जो थंबनेल हैं उनको जरूर दिखा दें बीच में कभी भी. नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री. यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि अरे सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री को तो सभी को पता है. बट स्टूडेंट्स, आई नो that I teach the students who are from the rural and even up to the Delhi University, even from JNU. But I know that yes, even the top level institutes, colleges, students, they don't have any idea that what to be taught. In this different types of poetry, you will become a great knowledgeable scholar कि actually जब हमारी यूनिट पोइट्री की है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की पोइट्री होती है. ये हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज, ये पूरा आता है पोइट्री में. इसको हम मान लेते हैं चलिए 1. अब नंबर 2 यहां पे लिखिए. ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2. क्या हो रहा है? नंबर 2 कैसे मिस हो रहा है ये? नंबर 2 में आता है, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लो सैक्सन्स के बारे में शाम के लेक्चर में, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंग्लो सैक्सन पोइट्री. देखिए
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, दिस चैप्टर, देन the students have to move for Anglo-Saxon poetry. Now under this heading क्या क्या पढ़ना है? Growth of literature under the Anglo-Saxons. Growth of literature under the Anglo-Saxons. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, ये इसको बिल्कुल भी मत समझिएगा कि बहुत आसान है या अरे इसको क्या करना. इट इज द बेस ऑफ योर नॉलेज ऑफ पोइट्री. एंड अंडर दिस यू विल ऑल्सो कम टू स्टडी पर्सनल एंड एलिजाइक पोएम्स. पर्सनल ऑब्लिक एलिजाइक पोएम्स, इसको नोट कर लीजिए. पर्सनल एलिजाइक पोएम्स. देन war poems and ballad literature. War poems and ballad literature. Then you will get to understand the riddles, epic poems, and also a brief account of the Anglo-Saxon poetry. मैं यहां लिख देता हूं. देखिए, रिडल्स, इसके बाद रिडल्स, उसके बाद आप लिख लो एपिक पोएम्स, एपिक पोएम्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री. जो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे लिख सकते हैं आप, अ ब्रीफ अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ये बात समझनी होगी कि हाउ द कोर्स हैज टू बी नर्चर्ड, हाउ द कोर्स हैज टू बी स्टडीड. आप लोग क्या करते हैं बच्चों कि आप लोग कोई भी किताब, कोई भी गाइड, कहीं से कोई मैटर मिल गया, फ्री का मैटर मिल गया, डिफरेंट पीडीएफ्स मिल गए, फेसबुक में मिल गया, डोंट डू लाइक दैट. बिकॉज अल्टीमेटली उससे आप किसी गंतव्य में, किसी लैंडमार्क पे आप नहीं पहुंचेंगे. बिलीव मी. दैट इज वाई कल से हमने ये एक नियम बनाया कि हम उन हजारों लाखों बच्चों तक ये पहुंचा दें कि उनको पढ़ना कैसे है. वो हमारे साथ पढ़ें या ना पढ़ें, दैट इज नॉट अ इशू. द इशू इज दैट दे शुड नो व्हाट टू स्टडी. राजेश चौबे गुड मॉर्निंग, नमस्ते. पविता गुड मॉर्निंग. रिल्स में कौन सी पोइट्री आती है, आई विल टेल यू. क्रिश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. यहां पे देखिए, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं, इसको क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है. अब आता है नंबर 3 पॉइंट में, क्रोनोलॉजी में जो पोइट्री में आप पढ़ते हैं, दैट इज द 14th सेंचुरी पोइट्री. 14th सेंचुरी पोइट्री, ये नंबर 3 पॉइंट आया. 2 पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं आपको. नंबर 3 पॉइंट, ठीक है. अब यहां पे आता है सबसे पहले चौसर एज. क्या आएगा? चौसर एज. नाउ आपको याद होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाई करने चाह रहे हैं, उनको पता होगा कि आई टीच चौसर्स एज इन डिटेल, अबाउट हिज ह्यूमर, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चौसर्स एज, अबाउट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, about his important works like Legend of Good Women, like Canterbury Tales. Why Canterbury Tales is one of the landmark pieces of English literature in the entire literary sector, and what not. Then I also teach John Gower, William Langland. Then you cannot forget the English Chaucerians and the Scottish Chaucerians. तो यहां पे चौसर एज में आप चौसर पढ़ेंगे, देन आप पढ़ेंगे जॉन गावर, देन लैंगलैंड, देन इसको कहते हैं पोस्ट चौसेरियंस. पोस्ट चौसेरियन से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. उनको कहते हैं इंग्लिश चौसेरियंस या स्कॉटिश चौसेरियंस. सो वी स्टडी लाइक दिस. This is the proper method of understanding the
द यूनिट दैट इज कॉल्ड पोइट्री। मैं आपको एक बार हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग वंदना। वंदना, यू बिलोंग टू विच सिटी? किस शहर से बिलोंग करते हैं आप वंदना? देखिए 15th सेंचुरी में देर कोई ये बता सकता है कि वाई 15th सेंचुरी इज टू बी कंसिडर्ड इन यूजीसी नेट? I have taught lakhs of students and in the online thousands of students. But in my present offline batches also, when I ask students that what is the reason that the 15th century age is known as a barren age? Have you ever heard about this? क्यों 15th century को barren age कहा जाता है? ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सर ने क्या कहा है। और अगर आपको नहीं आता है तो याद रखिएगा, इसको आपको पढ़ना होगा। 15th सेंचुरी एज को पढ़ना होगा, जो हम अपने क्लास में प्रॉपर डिटेल्स में बताते हैं कि व्हाई 15th सेंचुरी बिकेम अ बैरन एज। क्योंकि चौसर के बाद कोई ऐसा ऑथर डेवलप नहीं हुआ जिसने चौसर के लेवल को रीच किया। जो भी लोग थे वो दे वर जस्ट imbibing, copying, and so they could not be that fruitful. Moreover, there were other reasons also. तो 15th सेंचुरी में दो लोगों को आप जरूर पढ़ेंगे, and that is सर थॉमस व्याट and Henry Howard. Now, the fifth point after completing the 15th century would be number 5, Elizabethan poetry. अगर हम प्रॉपर तरीके से माने तो एलिजाबेथन पोइट्री या एलिजाबेथन एज, कल भी यूनिट 1 में हमने देखा ड्रामा में, वी स्पोक अबाउट द एलिजाबेथन ड्रामा, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिजाबेथन पोइट्री ओनली, बिकॉज यूनिट का नाम है पोइट्री. सो हाउ कैन वी फॉरगेट दैट एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ was a great ruler. She made all the people of England patriotic. They had lot of love and affection for their country. In this way, in this unit, in this section, we will study the characteristics of this age, and this makes you fundamentally very strong. Then Spencer, Philip Sidney, note it down. Spencer, Philip Sidney, these are the major projections. Drayton, Michael Drayton. Then Campion, one author is Champion, इसका पूरा नाम है Thomas Campion. Then Samuel Daniel. जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइन. सो यहां पे इस यूनिट में ये आ गया नंबर 5 का पॉइंट. अब आई एम गोइंग टू क्लीन दिस एंड आई एम गोइंग टू राइट द 6th पॉइंट. 6th पॉइंट पे आता है स्टूडेंट्स मेटाफिजिकल पोएट्री. मेटाफिजिकल पोएट्री आप सबने पढ़ा होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है. वी हैव टू स्टडी द इंट्रोडक्शन, the characteristics,
And after going through the introduction and characteristics, we will study about John Donne, about Andrew Marvell, about Herbert, about Henry Vaughan. Intro, and then Donne, Marvell, Vaughan, Herbert, and so on. Donne, Marvell, Herbert, Vaughan, and few others too. मेटाफिजिकल के बाद आपका नंबर आता है 7 पे Cavalier poetry. So this is the chronological order. Cavalier poetry में आपका आएगा 17th century lyric poetry. 17th century lyric poetry. We will study this. Then we will talk about George Wither. George Wither. कोई आप अगर नाम बताना चाहें तो यू कैन टेल मी द नेम. जॉन सकलिंग, जॉन सकलिंग. देन रिचर्ड लवलेस. जो बिगिनर्स हैं, हमारे स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो बिगिनर्स नहीं भी हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं, तो भी वो समझदार हो सकते हैं इन सेशंस को लेने के बाद. एडमंड वॉलर, और है रॉबर्ट हेरिक. So this will be the chronological sequence of understanding the unit poetry. Now, we come to 8th point. 8th point है students, Milton's poetry. How can we forget Milton? Milton is a grand poet. He is one of the greatest poets. And his Paradise Lost, Paradise Regained, and so many of his great poems. So we have to study in general about John Milton after this chronology. Then next 9th point comes precursors of Romanticism. This is one of the very important points to understand that इसको आपने अगर समझ लिया तो यहां से लेकर के रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, ये समझना काफी आसान हो जाएगा. यहां पे सबसे पहले समझना होगा, यद्यपि कि आई टीच ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स इन द हिस्ट्री पार्ट, कि जब हम शुरुआत करते हैं तो यहां पे आकर के पीरियड आता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल पोएम्स, ट्रांजिशनल पोएट, क्योंकि हम एक समय से दूसरे समय पे जंप कर रहे हैं. दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम द क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एज टुवर्ड्स द रोमांटिक एज. इस पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एज. और उस ट्रांजिशनल पोएट्स में या ट्रांजिशनल एज में यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांजिशनल एज. और ट्रांजिशनल एज में जो कवि थे जिन्होंने उस एज को ट्रांजिशन से रोमांटिक की तरफ ले गए, इसीलिए कहते हैं पोएट्स. उसमें सबसे पहला नाम है जेम्स थॉमसन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पोएम सीजन्स के लिए, सीजन्स. देन विलियम कॉलिंस, बहुत इंपॉर्टेंट विलियम कॉलिंस. देन डोंट फॉरगेट विलियम काउपर. देन ओशियानिक पोएम्स आपने नाम सुना होगा. हु वॉज द राइटर ऑफ ओशियानिक पोएम्स? जेम्स मैकफर्सन. जेम्स मैकफर्सन. इसके बाद आता है, इसको हटा देते हैं, थॉमस
चैटरटन, थॉमस चैटरटन उसी क्रोनोलॉजी में, देन थॉमस पर्सी, देन क्रैब, क्रैब का नाम आपने सुना होगा, क्रैब, क्रैब का पूरा नाम है जॉर्ज क्रैब, देन एडवर्ड गिबन, एडवर्ड गिबन, स्टूडेंट्स आपको याद है एडवर्ड गिबन किस लिए फेमस है? फॉर व्हाट एडवर्ड गिबन इज फेमस? कैन एनीबडी टेल मी? द ग्रेट मोन्यूमेंटल वर्क विच ही हैज रिटन। इसके बाद कुछ बड़े राइटर्स आते हैं, दैट इज थॉमस ग्रे, द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, देन रॉबर्ट बर्न्स, great writer Thomas Gray, Robert Burns, then William Blake, Songs of Evening, Songs of Experience, of Innocence, then Edmund Burke. So this is how you have to study in the chronological manner for Unit 2. Fine. In the same way, now we proceed to the 10th point, that is the romantic poetry. Number 10 point, पोइट्री की जो यूनिट है स्टूडेंट्स, दिस पोइट्री, दिस इज माई बुक, यहाँ आप देखिए पोइट्री लिखा हुआ है। दिस पोइट्री इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बिकॉज पोइट्री इज वेरी लार्ज, इट हैज अ बिग सिलेबस इफ कंपेयर टू ड्रामा। सो पोइट्री इन माई बुक इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सो वी आर हियर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रोमांटिक पोइट्री। इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन हम पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन इन माय क्लासेस। देन आई टीच विलियम वर्ड्सवर्थ इन डिटेल, विलियम वर्ड्सवर्थ, देन कोलरिज in detail with his poems, then Sade, Robert Sade, then how can we forget Byron, then how can we forget Shelley, and yes, Keats. बीच बीच में कुछ genuine छोटे authors भी होते हैं। So this is poetry second part, first part. The second part of this unit I will be taking with you tomorrow because poetry is a big unit and it is divided into two parts. देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the unit poetry is divided into two parts, part 1 and part 2. पार्ट 1 में मैंने आपको आज एंग्लो सैक्सन से लेकर के और रोमांटिक तक पूरा डिस्कस किया कि क्या क्या पढ़ते हैं। देन इन द पोइट्री पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, दैट विल कम फ्रॉम द विक्टोरियन से लेकर के उसके बाद आएगा मॉडर्न के बाद आएगा पोस्ट मॉडर्न, वो पूरा करते हुए यहां पे हम लोग खत्म करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ पोइट्री। हाउ मेनी प्रिपरेशन नीडेड फॉर इंग्लिश? आई हैव रिटन मास्टर्स इन इंग्लिश बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो फाउंडेशन बेस। व्हाट शुड आई डू? स्पेक्ट्रम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम एंड यू बिलोंग टू विच सिटी? जैसे मैंने अपने शुरुआत के अभी लेक्चर में बताया कि those students who wish to be a part of OSN Academy and they love my classes, they feel that yes, this is the right place for their foundation, for their structure to be very solid and secured
टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपका कमज़ोर है तो जो छत बनेगी वो बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, वो गिर सकती है। आपका नाम है आशुतोष शर्मा जी और आप मध्य प्रदेश से हैं। बहुत अच्छी बात है, एमपी के हैं। एमपी के से हमारा बड़ा जुड़ाव रहा है, क्योंकि एमपी देश में एक ऐसा स्टेट है जिसमें एमपी पीएससी होता है, और हमारा चूंकि एक अच्छा एमपी से जुड़ाव इसलिए रहा है क्योंकि एमपी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे ओएसएन एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस से क्वालिफाई करके दे हैव बिकम प्रोफेसर्स, एंड इन द ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो in the last 3-4 years, maximum students from MP, they have qualified NET, whoever were studying with me. So, स्पेक्ट्रम जी मतलब आशुतोष शर्मा जी, आपको मिला होगा कि स्क्रीन पे हमारा नंबर है। हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात करके एप्लीकेशन का लिंक ले करके, और जो नया बैच शुरू हुआ है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। एनी गाइडेंस यू कैन टेक फ्रॉम मी। Yes, I am taking daily one class in my application for the new students who are joining daily, who are studying good, and they are doing the PYQs, they are doing the test series, they are doing the paper one, they are doing the PDFs, they are doing everything and getting enlightenment day by day. Dear Ashutosh, I just told you that my number is given on the screen. You WhatsApp me, take the link, download the application, see the new batch, see the details, and in case of any doubts, you can come to us. 24/7, the students are nowadays in jobs all over the country. So don't need to waste any time. You can study 24/7. The validity is so much, 1 year. And believe me, even the below poverty line students, the weakest students of our society, of our country, they can be a part of OSN Academy and study good and make their career. With this, don't forget to send a like button if you like my classes, if you like my sessions, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। आप नेट के साथ साथ MPPSC की भी प्रिपेयर कर सकते हैं आशुतोष। मैंने फिर आपसे कहा कि you have to just connect and take the guidance. Accordingly, you have to start your career in case you are career oriented. So कल एक बार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए। Till then, have a great day.